हम्म। आप अब आ रही है। हेलो। अब आ रही है। हाँ। हाँ। So just I am going to start the today class of the hospital information 303. Right? It is a fortunate enough. It is a pleasure. It is a just to listen me. It is a pleasure for us. It is lecture first time will be recorded and also on uploaded to the. So it is a pleasure where this record you can see whenever you want on the site of the university where I and we ourselves teach. Right you are. So basically what is the hospital information is concerned. It is asked if as far as the visitors just I am taking this time. You are listening to all of you? सब लोग सुन रहे हो? हाँ. Yes. As just you listen me, whenever I ask if you understand or not, then you tell me. Okay? It's just I'm just information is concerned, information and nothing. It's only you are the final year student of hospital administration. No doubt. Whenever as far as the hospital or health information, it is very essential for us. We have to be rich in health information system. It is a very clear cut, and the man who is rich in information, successful person will be known as. Because you are related with health information, so you will be success administrator of the hospital when you know success rich information as far as the health information on the hello health information is concerned. The basically what the health information because you just I am teaching you medical record science. Medical record science means medical record. Just you know what is the medical record. If I ask you, just you tell me only one point of the definition which I have taught in your second year, and I know that this what is the medical record. मेडिकल रिकॉर्ड काजल भाई आप जानती हो डेफिनेशन मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है? हाँ. No, no, just don't clarify. I will just clarify. Who apologizes who? Hmm. Hmm. The- Right. Very good. Very good. Yeah, as far as the just as a medical record is nothing. It is a medical care which is a documented. Medical care is documented, which is known as medical record. It is a confusion to all you, for you, not at all of you, those who are not knowing about this medical record science. If there is any sort of a storage in the hospital where we have to maintain. It is not a tube, and a day it is a very pleasure for you to call. They will know what is the medical record. Medical record is nothing. It is a medical care which is provided by the doctors in the hospitals. And what sort of a care is given, it should be recorded. If it is recorded, it is become documented and that becomes the record. Right? So first, just I tell you what the medical record is, what care rendered to the patient during hospital, कौन सी केयर क्या केयर मरीज को हॉस्पिटल में दी जा रही है, where care is given, where hospital is there, where the care is given to the patient who comes for treatment,
Third, why? It is very essential why this care is provided by the doctors during the hospitals. It should also be documented and it should be recorded by the doctor concerned. And third, how? How the medical care is given to the patient, it should be narrated by the doctors whenever any patient comes. And because this, until unless the detail of this medical care will not be there will be no diagnosis, no treatment can be done by the doctor. Doctor knows what the treatment should be given to the patient who comes for the treatment, but he never just he records all the things in detail. It means good care is provided by the doctor. ठीक है. Last is who has given who has given the care to the patient during the hospitals. तो मैं अब थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ कि मेडिकल रिकॉर्ड है क्या. मेडिकल रिकॉर्ड मेडिकल केयर जब डॉक्यूमेंट हो जाती है, रिकॉर्ड कर ली जाती है, तो वो मेडिकल रिकॉर्ड हो जाता है. Just I teach you medical record science. It means I teach you the science of medical care which is provided in the hospitals by the doctors. Right? If it is a recorded, just I know, you know, आप भी अच्छी तरह जानते हैं सब लोग, जितना अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन होगा उतनी अच्छी मेडिकल केयर उस हॉस्पिटल में दी जा रही है. ठीक है, समझे कि नहीं? रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन होगा तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द हॉस्पिटल, फॉर द डॉक्टर्स एज वेल एज फॉर द पेशेंट. उतना ही अच्छा होगा. हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इट इज वेरी एसेंशियल कि हॉस्पिटल बना किसके लिए? हॉस्पिटल मरीजों के लिए बना है. और मरीज कब ज्यादा आएंगे? जब अच्छी केयर दी जाएगी. अगर अच्छी केयर हॉस्पिटल में नहीं दी जाएगी तो मरीज भी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचेगा. थर्ड, कि अगर केयर अच्छी दी जाती है तो मरीज ज्यादा अच्छे आएंगे तो स्टाफ भी रखे जा सकते हैं. उसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, and other person, nursing staff है, and other those who are give the support in the treatment of the patient during the hospitalization of the patient. ठीक है, आप ये समझ में आ गया कि मेडिकल रिकॉर्ड या मेडिकल रिकॉर्ड है क्या? समझिए मन का. मनीषा, सब लोग समझ गए? हाँ, तो आप देखिए कि हाँ, इट मीन्स आप कितनी तरीके की मेडिकल केयर दी जाती है. तो निश्चय ये मेडिकल केयर दी जाती. अगर मेडिकल केयर जैसे काइंड्स ऑफ मेडिकल केयर किस तरह की केयर दी जाती है, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर which is provided in the primary health centers by the doctors. ठीक है. And second is a secondary health care which is provided by the doctors, not in the PSC or CFPSC, because they as per the primary health care is concerned, PSC, sub-HC, as well as community health center. Community health center is comes in the secondary medical care. If the patient comes, suppose just I am taking the example of सड़क की एक दुर्घटना हो, सड़क पे दुर्घटना हो जाती है तो वहां पास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर के पास जाता है. डॉक्टर उसे इलाज करता है. अगर वो मैनेजेबल होता है तो वो रिकॉर्ड ट्रीटमेंट देता है. अगर नहीं होता है, उसे लगता है कि इसे अच्छा इलाज चाहिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे रेफर कर देगा. दिस इज एज फार एज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज फर्स्ट who refer to the patient to the district hospital. District hospital or community health center, it is a first referral hospital. District hospital is nothing, is a referral hospital, first referral hospital, because it is the case has been primary health center has referred the case to the district hospital or a community health center.
And third care is the tertiary health care. टर्सरी हेल्थ केयर स्कीम में दी जाती है. टर्सरी हेल्थ केयर जो दी जाती है वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के द्वारा, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के द्वारा. If the case is manageable at district secondary, the district hospital, community health center, that can be treated by my specialized doctors, and patient get the treatment as well as also cure from the district hospital. Sometimes district hospital doctor has got the, he thinks that it's a super specialty treatment should be given. Then doctors of district hospital where the secondary care is given, he refer to the patient to the tertiary for the tertiary care which is provided by the medical college and super specialty hospital just like Sanjay Gandhi SGPGI as well as AIIMS, All India Institute of India, which is situated in India. If just I am telling you as far as the tertiary healthcare is given, it is, can be provided in medical colleges as well as the super specialty hospitals just like as Sanjay Gandhi SGPGI or India Institute of Delhi. So this such type of medical care is care. These are all the care which I am discussing जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या सारी चीजें ही हेल्थ इंफॉर्मेशन है. अगर इन सब हेल्थ इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जानेगा तो स्वाभाविक है कि हॉस्पिटल का मेडिकल केयर भी अच्छी होगी, और जब मेडिकल केयर अच्छी होगी तो हॉस्पिटल भी मरीज ज्यादा आएंगे, और hospital doctors will be get the reputation at the hospital because the patient needs only the treatment. The treatment is given by the super specialty and specialized doctor. No doubt the patient will get the treatment and will be cured. समझ में आ रहा भाई सबको? हेलो, सारी सबसे नहीं कोई किसी को कंफ्यूजन अभी इसमें है, क्योंकि आई एम आल्सो राइटिंग दिस थिंग इन very simple form, and I think it is just you can understand. He just pointing to this. I told you first, who the successful in the who the successful in hospital administration, those who has a rich information concerning with the health care. If you are well, if the administrator of the hospital is well known as far as the medical care is concerned, what type of a care is provided, if he knows how should be given, who should be given, and why should be given, where should be given, these all the facts is related to the health information. And health information is nothing. It is only the medical care. If the medical care is recorded, if medical care is recorded properly, no doubt the medical treatment will also be given properly and should be recorded. Because you know it, as far as the medical treatment is concerned, it is reflected by the good medical records. Good medical record, if it is maintained by the hospital or by the doctors, it means quality of treatment will also be given to them. समझ में आ रहा है? ये रिकॉर्डिंग है, मेडिकल रिकॉर्डिंग है. मेडिकल रिकॉर्डिंग जो ऐसा है जिसके अगर अच्छा लिखा होता है तो ये इट इज a sufficient evidence for the legal purpose कि these treatment which is provided in the hospital, it is a first evidence when, because as far the case sheet is concerned, कुछ लोग जो मरीज का रिकॉर्ड होता है उसे केस शीट बोलते हैं, कुछ लोग BST बोलते हैं. जस्ट यू नो इट दैट आई एम retired from medical college, GSVF Medical College, Kanpur. As a medical record officer, I just maintain case sheet as bad head ticket. Bad head BHT. BST is nothing. It is a case record of the patient who gets the admission in the hospital. If they were less, I tried my best to maintain the good medical record when I was posted in Medical College, Kanpur. Because no doubt
as per the medical college hospital is a specialized hospital as well as super specialized hospital, and all the record was maintained at that time with quality in nature. Is quality in nature is concerned. The quality of record was maintained by the doctor concerned. It showed that the quality of treatment was given because only the bad etiquette of KCT, only evidence, legal evidence, कि what sort of the treatment was given by the doctors in the hospital when the patient was treated by them. Understand भाई? कुछ confusion है तो बोलो भाई, मन का कोई confusion नहीं है. ठीक है, काजल, Anup is here or not? Anup has joined or not? हाँ, अच्छा है भाई. तो जैसा मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई कि नहीं? क्या एज पर मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है, सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होती है, थर्ड केयर हेल्थ क्या होती है, और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जितनी अच्छी नॉलेज आपको हेल्थ केयर में होगी. हेल्थ केयर, whenever I say the medical record is nothing, just you mind it. Whenever I say the word medical record, you understand the medical record. It is just an indication of medical care. Because a medical record is enough, when medical care is documented, it becomes a record. I teach you the medical record science, it means I teach you medical care science. Medical care science is nothing. Medical care science is how the patient gets the hospital and the quality of treatment. I discuss in second year how the medical records can be qualitative in nature. This time I'm taking the class of third final year. I'm just taking hospital information. And just I've given the notes that I think now just I concluded all the things. I concluded all the things as per the medical record is concerned. ठीक है, मेरा ख्याल है इस समय सारी चीजें सबको क्लियर हो गई कि मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, किसके द्वारा देती है, कैसे देना चाहिए. These I will just discuss in second year in very detail. So you have to know, just you conclude yourself in a health information system, which I am teaching you a paper, health information 303. Now I've come to the point कि just I discuss in note which just I will teach you. That is there's a restriction of vital events. Because I have given I just all the time taught you in hospital and information and given you notes, and just for revision of just I given this conclusion, and I concluded the medical record science कि what you are the student of hospital administration, you may be the well versed administrator of the hospital because you are the well versed in the knowledge of medical care which is provided by the hospital by the doctor concerned. Because as per the medical treatment is concerned, there is not only the doctor is responsible for the treatment, there's a nursing staff is there, paramedical staff is there, and other specialized sub branches is like just like pathological report is concerned, just for radiological report is concerned. No doubt when the patient comes in the hospital, he doesn't know about his problem. He knows only the problem which he has. जब मरीज कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाता है तो उसको ये पता नहीं होता कि उसको कौन सी बीमारी है. वो केवल केवल जानता है तो क्या जानता है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसको क्या प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम जानता है. और डॉक्टर्स has the only the complication and problem.
because these are known as the symptomatic, what is the symptoms of the patient. He only just realize himself and tells to the doctors. No doubt, doctors start immediately the treatment after clinical examination of the patient. क्लिनिकली एग्जाम करने के बाद मरीज का इलाज डॉक्टर शुरू कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल diagnosis. Provisional diagnosis, just doctors, as far as the clinical knowledge is concerned of the doctor, clinical knowledge and with symptomatic changes what happen pathologically or radiologically, he starts the treatment on the basis of provisional diagnosis. And as far as the confirmatory diagnosis is concerned, he advises for pathological investigation as per the radiological investigation. When the pathological reports, radiological reports come to the doctor's concern under whom the patient is treated, he just start the specialized treatment on the reports of pathology as well as radiology together with the clinical knowledge which doctor having in, in their mind. So there are three things is very important for the treatment, good treatment, the clinical knowledge of concerned doctors as well as pathological report and radiological reports. And three things, because as per the clinical knowledge is the best knowledge of the doctors who clinically made provisional diagnosis and start the treatment to the patient. And as per the, with the help of pathological and radiological support reports, he formed the confirmed diagnosis and doctor started a specialized treatment according to the confirmed diagnosis which has been made. ठीक है, तो दीज आर द आई थिंक जैसे आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हेल्थ इंफॉर्मेशन ही है। अगर आप इस हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे तो ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेडिकल प्राइमरी हेल्थ केयर से जैसा आई टोल्ड यू व्हाट द लेवल ऑफ डिसीजन है, ये प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द डॉक्टर्स, first centers of the where the medical care is given. Second level of care, medical care is the district hospital, or tertiary, third level of medical care is the tertiary hospital. Where the specialized doctors are present who provide the treatment. ठीक है, अब just come to the point. This is just I concluded what you have been taught by myself during your second year and third year course. I will discuss in detail, and now you come to the point of this hospital analysis, which is a 303 registration of vital events. ठीक है, एवरीबडी है, फॉलो टू मी, सभी लोग मेरे को सुन रहे हैं? हेलो काजल, नैन्सी, समझ में आया? मनीषा, मनका, तो जैसे यू आर हैविंग एनी, कोई आप लोगों में किसी को किसी बात का कंफ्यूजन है, यू कैन जस्ट आस्क मी इन हिंदी and just you can remove your doubt whatever having with you as far as the medical care which is provided by the doctor in the hospital. अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो मेडिकल केयर के बारे में आप अपना कंफ्यूजन की बहुत समय बाद मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि वॉट एवर आई डिस्कस, मैंने जो भी यहाँ बताया है वो कंक्लूड करके बताया है जिससे आपकी मेमोरी फिर तेज हो जाए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी तरफ आपका ध्यान जाए। ठीक है, मेरी समझ में आ गया हो कि व्हाट आई हैव डिस्कस in this lecture. You also can see it is very fortunate enough to you, all of you, whenever you get the any confusion, go to the site of university and again you can get the a reference of the teaching which I have taught today, which I am teaching today. And you also can reference your what I have been taught in second year, third year. But just it is I concluded the subject as per the medical is called science is concerned.
जैसा आई एम जिसके मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि डॉक्टर जिसके अंदर में होता है पैरामेडिकल्स, पैरामेडिकल्स में जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, टेक्नीशियन आ गए, न्यूट्रिशन में डाइटिशियन आ गए, they also come in medical because they have also very good role as per to the treatment of the doctor concerned. Because as far as the physiotherapy is concerned, it is rehabilitative measures. आप मरीज कैसे है उसको पुराने फॉर्म में लाने के लिए फिजियोथेरापिस्ट प्लेड ए वाइटल रोल. एंड एज पर द technician is concerned, no doubt, he also played a very good role as per the diagnosis is concerned, pathological lab is concerned. Lekin one thing I tell you, it is very important, whatever the physiotherapist do, whatever the lab technician do, what other paramedical do, they should also write what you did with the patient during the hospitalization. Where this medical record is not in so आई मीन से नॉट इज इतना प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ये उतनी तेजी के साथ नहीं हो रहा. अगर ये सब चीजें आप लोगों को जैसे है तो यू व्हाई यू कैन बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल बिकॉज यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मेडिकल केयर. maybe the paramedical care is concerned, paramedical पर्सनल्स जो प्रोवाइड द केयर फिजियोथेरेपी जैसा हुआ, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है, लैब टेक्नीशियन है, दीज आर द do whatever they done, but they also should write because that should write that it becomes the record, and that record is that becomes the medical record. And whenever I teach the medical record science, तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं. इसमें हॉस्पिटल का मरीज ही नहीं आता है, लेकिन इसमें फिजियोथेरापिस्ट, lab technicians, and other personnel of the doctor concerned. Because as for that, there are the two types of the teacher, a non-clinical and clinical. There is no doubt the patient is treated by the doctors, clinical doctors, and as per the knowledge is concerned, non-clinical teachers are very good because as far as they do the preliminary knowledge of medical science from, and just I taught you in details in second year and third year what the medical record sign. किसी को सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो मैंने आज पढ़ाया है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है? क्यों भाई नहीं है? तो आप जैसे ये मैंने भी अभी तक जो नोट इसमें दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट बहुत जरूरी है. इसके लिए पहले नैन्सी पढ़े पैराग्राफ, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स क्या होता है. हाँ, पढ़िए पहला पैराग्राफ. हम्म. तो ये these are the rest vital to just you not just what vital events are, what are the vital events you just not discuss here. तो आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स जो मैंने लिखा है नोट में, उसमें वाइटल इवेंट्स क्या हैं? वाइटल इवेंट जो हैं जैसे बर्थ है, डेथ है. ये बर्थ एंड डेथ है. दूसरे it is a very important the birth and death information. If these are the accurate, it means that these are a very important. As per the just I tell you, and I will discuss it. These are the. It is a at just this time just a pandemic is there. Corona की pandemic चल रही है.
उसमें बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं जिसके मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है एंड मोर्टेलिटी भी बहुत है, डेथ भी, मरीज भी बहुत है, डेथ भी हो रहा है because a pandemic. I will not discuss in detail what the pandemic and what is the corona this scientific. लेकिन as such it is a very important thing is this कि what care is given. थर्ड इस समय भी आ रहा है कि आप जैसे जैसे you have to keep the watch over it what the happening due to this pandemic. हम लोगों को जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते कि जो ये हैपनिंग हो रही है इट इज नथिंग, it is a medical information. You all of you, the final year student, you keep over a vigilance, you keep over इन सब पर ध्यान दीजिए और जो ये ध्यान दो के पढ़ोगी कि इस समय क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, कैसे डॉक्टर्स के पास मरीज जा रहा है, मरीज ये किस तरह की है, क्या डेफिशिएंसी है, these are the related all the medical. If you know these all things, this is a nothing. It is a, you may be the rich in information of medical care. अगर ये सारी चीजें आपको वाइटल इवेंट्स के जैसे है कि आपके बारे में किस समय कितनी डेथ हुई, कितने मरीज आए, कितने ठीक हो गए, कितने नहीं ठीक हो पाए हैं, क्या कारण था कि नहीं, इट इज ओनली जस्ट यू कैन नो व्हेन इट इज इन द नॉलेज ऑफ द डॉक्टर कंसर्न वेयर द ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है। सेकंड, मन का सेकंड पैराग्राफ पढ़ें, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स का। मन का हेलो हेलो, क्यों भाई सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो हाँ नैन्सी, हाँ है, हाँ वो बाकी लिंक कट गया था, दूसरा लिंक भेज रहे हैं। ठीक है। अच्छा इस समय आ रही कि नहीं, इस समय आवाज आ रही कि नहीं? लिंक कट गया था ना बीच में, दूसरा लिंक भेज रहे हैं, उस पर क्लिक करना। लेट चली गई ना।
हेलो। हाँ मनका। हेलो। काजल भाई सब कुछ सुनाई दे रही है दोबारा? कहाँ तक आपने हम समझा था? मनका कहाँ तक समझा था? कहाँ तक? कहाँ तक मनका समझे थे? मैं बीच में हाँ, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में मैंने ये पैरामेडिकल और ये है कि वो सब सुन लिया था। हैं? हाँ, तो अब ये आप सेकंड पैराग्राफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट मन का पढ़े आप। सेकंड पैराग्राफ। हाँ, सेकंड पैरा रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट। हम्म। 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 हाँ, ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ इसे। ठीक है मन का। हम्म। हाँ, तो ये नैन्सी अब सुनिए कि द यूनाइटेड नेशन डिफाइंड दैट वाइटल इवेंट रजिस्ट्रेशन is statistical recording and reporting of the occurrence and collection and compilation, presentation, analysis, distribution of statistics. इसमें इस स्टैटिक में जो मेडिकल स्टेट वाइटल इवेंट्स में आता है उसमें आता है सबसे पहले सबसे पहले वाइटल इवेंट है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ कितना बच्चों ने लाइव बर्थ मीन कितने बच्चे ने जन्म लिया है। डेथ कितनी डेथ हुई है। फीटल डेथ कितने बच्चे जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आवासी की डेथ हो गई है। कितनी मैरिजेज हुई हैं। कितने डाइवोर्स हुए हैं। कितने अडॉप्टेशन हुए हैं कि बच्चे अगर अडॉप्टेशन जैसे as far as just I discussing give the an example of the pandemic of this corona. If there are no doubt the parents have been died due to the corona and children are there. So these are the things that are very important for the governments too. It is very important for the you people as per the administrator of the hospital too, कि how many deaths has been occurred. And it is just a process of also know कि how many parents have been died due to this pandemic. No doubt the government also pay their attention to the children for there who have the parents who have been died due to the corona. So these are the things that how the government is paying the attention as far as this vital event is concerned. You should also be have to be rich as far the information is concerned. जैसे वाइटल इवेंट्स में मैंने बोला कि आप लीगल एडॉप्टेशन क्या है। अगर जो बच्चे जिनकी डेथ हो गई है पेरेंट्स की तो वो तो अनाथ हो गए। और जब अनाथ हो गए तो कुछ लोगों ने पेपर्स में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने कहा कि मैं इन बच्चों को अडॉप्ट कर लूंगा। तो एडॉप्टेशन कहने से नहीं हो जाएगा। देयर इज अ लीगल प्रोसेस जस्ट फॉर द लीगल एडॉप्टेशन। दैट शुड आल्सो बी legal adaptation. After getting the legal adaptation,
who adopt that children, they will be the parents of themselves. And all the care which is taken by the natural parent, it all can be given by the adopted parent. राइट हो? समझ में आ गई कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और चूंकि आप हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स कर रहे हैं, तो दीज दो इंफॉर्मेशन भी आपकी वाइटल इवेंट्स की मालूम होनी चाहिए surrounding. Just I will discuss the tomorrow for the epidemiological status is concerned. This information related with epidemiological, because as far as the epidemiological status is concerned, how many patients that is related to the community, yeah, where the patient gets, and as far as the investigator where they try to know it, okay, how many patients are suffering. So this is a comp of it is in epidemiology. Lekin these are all the things, whatever the maybe the epidemiology, maybe the medicine, maybe surgery, and maybe orthopedic, and these are all the things. Because the patient gets all the care in the hospital, where the specialized service is given by the medical college and the super specialty hospital. तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है कि अच्छे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए। और जब हॉस्पिटल अच्छे इंफॉर्मेशन बनोगे, इट मीन्स यू विल रिच in all the information. It is not a very clear. Just I am telling the successful person who has having the rich information. You are connected, आप लोग मेडिकल साइड से कनेक्टेड हैं, इसलिए आपको रिच इंफॉर्मेशन मेडिकल साइड में होनी चाहिए। जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, अगर वो इंजीनियरिंग का अच्छा करते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो दे आर रिच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड सेम थिंग इज इट, they will be succeed in technological. Those who hotel management पढ़ाते हैं, they will know the science of hotel management. They will be successful manager of the hotel management. So these are the thing. Rich information is very essential for any field. You are in the field of medical science. It means you have to get the rich information related to the medical care, because the medical care is the only key point by which you can provide a good treatment to the doctors in the hospitals. Right? कुछ confusion हो तो पूछ लो भाई। मन का कहा जाए हम। और आप मनीषा, सेकंड मैंने दिया था सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आप जैसे जैसे डाउन आप मनीषा आप पढ़े कर रहे हो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। केवल आप आधा पैराग्राफ पढ़िएगा, जस्ट रीड एट हाफ पैराग्राफ। मनीषा। हम्म। हाँ। हाँ ठीक है। ये जो सैंपल सर्वे है आजकल के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैंपल सर्वे इज कंसर्न। Notice that the sample survey is nothing. As per the being the hospital medical record officer when I was there, so as per the what the percent as per the morbidity is concerned, as per the mortality is concerned, as per the how many deaths in gynecological is concerned, or the pediatrics is concerned, ये सारी डिटेल्स होती थी। और ये डिटेल्स भी टाइम टू टाइम कैलकुलेट करना पड़ता, जिससे ये पता लग जाए कि आज मेडिसिन की मरीज की क्या स्थिति है, कितने मरीज आए, कितने लोग मरीज ठीक हुए, कितने नहीं ठीक हुए, कितने पीडियाट्रिक्स में ठीक हुए नहीं हुए, कितने गायनेकोलॉजिस्ट में हुए नहीं ठीक हुए। तो दीज आर द थिंग्स, ये वाइटल इवेंट्स, दीज वाइटल इवेंट being administrator of the hospital, you have to be get all the knowledge of this। जैसे रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेटर है, टाइम टू टाइम ये
जब हम किसी कम्युनिटी या उसकी बात करते हैं, या नेशन में आपने सेंसस पढ़ा चुका हूं मैं कि आपकी सेंसस में जैसे इस समय एक बहुत पहले 1918 में एक स्पेनिश फ्लू नाम का, मैं जैसा आई एम गिविंग द सम रेफरेंस, स्पेनिश फ्लू जो था ये 1918 में हुआ था। ये शायद एक स्पेन से कोई आया होगा, वो लेके आया था। तो उस समय इंडिया में जैसा आया, जैसे लिसन कि आज पर 120 लाख, 1 करोड़ 20 लाख लोग इंडिया में ही मर गए थे। 1918 की बात कर रहा हूँ। दैट वॉज मोर उस समय, एज पर द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, दैट वॉज नॉट देयर, and not in India. Infrastructure is enough of the whole world, because every whole world is suffering with a Spanish flu, and this is the second time when the corona is here. So as soon as the infrastructure of medical is there, we can prevent all the occurrence of mortality which is happening today. So we have to keep vigilance over it. What the measures have been taken by the government, and because these are the measures are very important for the hospital administrators, because hospital administrators have to pepper themselves as such what the happening in the society. ठीक है, तो जो वाइटल इवेंट्स है वो एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको ही हॉस्पिटल में मरीज को इलाज देना है जो इलाज के लिए आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ मनीषा? हेलो मनीषा, क्लियर हुआ? अच्छा, अब सेकंड पैराग्राफ आकृति आप पढ़िए। हम्म। It is a very important sample registration is a very important system. As per the sample registration, and because due to the sample registration की वजह से इसे बहुत ही हेल्थ इंफॉर्मेशन का बहुत इम्पोर्टेंट स्टैटिकल मैटर है, जिसकी वजह से हम कितने रिलायबल इंफॉर्मेशन है बर्थ की, डेथ की। सैंपल रजिस्ट्रेशन का मतलब है जितनी ज्यादा बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्ड होगी उतनी ज्यादा हमें एक्यूरेसी भी होगी। एक्यूरेसी होगी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन की, उतनी ज्यादा हम व्यवस्था कर लेंगे। अगर हमें हेल्थ और डेथ में व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द सैंपल रजिस्ट्रेशन, हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन आर देयर, हाउ मेनी पेशेंट गेटिंग द, how many patient have been cured, how many patient have been cured. This depends upon the condition of the patient concern, किस लेवल का मरीज आया है, क्या हुआ है। जैसे अब एक दूसरे है जिसमें आंख ज्यादा से इस समय ट्रीटमेंट में कि आंख खराब हो जाती है। तो आंख खराब क्यों हो जाती है कि जो लोग बहुत ही डायबिटीज होते हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज रखते हैं, और जिनका स्टेरॉइड इस पीरियड में कोरोना से बचने के लिए स्टेरॉइड का जो ज्यादा यूज कर लिया है, उसकी वजह से आंख खराब हो रही है। दिस इज स्पेसिफिक एज पर द अनक्योरेबल, मतलब नॉट डायबिटिक जो क्योर है, मतलब कंट्रोल नहीं है, मेरा मतलब देखिए कंट्रोल डायबिटीज नहीं है इंसुलिन और सब देने के बावजूद भी, उन लोगों को साथ साथ जिनको इस कोरोना महामारी से बचने के लिए अगर हो गया स्टेरॉइड ज्यादा दे दिया गया है, उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो दीज आर इंफॉर्मेशन विच मैं आपको सब बता रहा हूँ। आप लोग भी कोशिश किया करिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल बनने के लिए। ठीक है, now the sample registration is nothing because it is a survey। हाँ, इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीजें होने के बाद इन्वेस्टिगेटर करते हैं, जो हमारे यहाँ होते हैं इन्वेस्टिगेटर होते हैं, और यही लोग ये तैयार करते हैं। जैसे मैं एज मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, दीज आर द थिंग व्हिच इज आई एम टेलिंग यू, दिस एंड आई डिड इट ड्यूरिंग माय medical record officer when I posted as medical record officer in medical college.
ये सारी चीजें मैंने की है, लेकिन दैट वाज द लिमिटेशन फॉर द मेडिकल कॉलेज, फॉर द हॉस्पिटल, बिकॉज I was the medical record officer of the LLR hospital associated with medical college. That way, I was concerned with only for the hospital. These are the statistical information. I was to supposed to maintain the thing. I was having all the information related with the medical care. And same things. You are the administrator, you know the very much as far as the medical care is concerned. You are the main person. So you are just teaching this. Just I am teaching you this medical record science. Medical record science is nothing, is the medical science. Because in medical science, treatment is given by the hospital. And just I discussed how the treatment is given. These are the things I discussed in detail in second year, third year. Now, आप चूंकि ये सारी चीजें आप दोबारा अगर आप चाहेंगे साइट पे जाएंगे, it's a pleasure for us and also for you because you can get another and refresh yourself as the medical records, which I have discussed in 303 in a hospital information system. काजल भाई क्लियर हो गया? काजल, हाँ, आप कुछ पूछना, आप किसी को पूछना हो तो पूछ लें, कुछ भी पूछना हो। हम्म, सबको मालूम हो क्या है? कुछ भी नहीं पूछना है। तो भाई, काजल, मनका, नैन्सी, सबको, आकृति नहीं पता। I think I explained these all the things because you are the best and you try to get the best knowledge as far as medical care is concerned। और इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? ओके, ओके, ओके। नहीं बोल रहा था, क्यों भैया?